Hello everybody, my name is Ashish Kumar. The call is getting recorded. Welcome to Specialized Training Session 4. In this specialized training, we are going to discuss about how to prepare a corporate standard internship report. This is very important because a lot of time interns ask that, "Ki, sir, we have prepared a report, but I am not confident enough that is my report is up to the corporate standard or not." Okay, so and that's why we think that it's very important to discuss about how to make report. Okay. Okay. First of all, I would like to tell you guys, the report have two parts. Any report. First part is formatting. Second part is content. Okay. जैसे कि and a lot of time you guys have thought of heard about this word that कि don't judge a book by the cover. Means don't judge a person by the looks, by the representation. But that is a thought. But in actuality, in the professional world, in the actual world, people get judged by their looks. The books get judged by the cover. फिल्म का टीजर अच्छा नहीं, फिल्म नहीं देखते हम लोग. And that is the sad reality. Okay, so it is very important. There are a lot of times that people read a lot of books, a lot of reports, जो कि ऊपर से अच्छा दिख रहा है, मतलब formatting is very nice, representation is very nice, but the content was not good, and then they bitch about it कि अरे बहुत ऊपर से अच्छा दिख रहा था, कंटेंट अच्छा नहीं निकला. Of course they bitch about it. Okay, but people, I have never heard that people go through and read a book which is very bad formatted and अंदर बोले कि formatting अच्छा नहीं था but content अच्छा था. ऐसा कभी नहीं होता. Never ever happen. That's why it's very important. The report format should be very good. The formatting of report should be very nice. So that is the first knowledge I want to give. The second knowledge is formatting of a report is just like, suppose if you are a very good electrical engineer, if you are very good MBA finance or MBA in marketing or something, it is nothing to do with how good you are, how good your looks are, right? If you are a well physique person, or you can wear a nice cloth, or your pics are very good, your LinkedIn profile pic, your Google pics are very nice. हाँ, तो उन दोनों को रिलेशन नहीं है. What degree you have and what kind of looks you have, no relation. Same way, when you prepare a report, so prepare a well formatted report and the well content, there is no relation. You can become a very you can become a guy, you can prepare a very nice report, well formatted, but content नहीं आता अच्छा, fine. I can make a very nice report, but I cannot make a very nice reports as a content wise. मुझे हर टॉपिक पे तुम रिपोर्ट बनाने दो तो I can make a nice report, but content उस टॉपिक पे अच्छा होगा कि नहीं, I don't know. I'm not expert in all the topics. Okay, so making a nice report is an art, and that you need to understand. This is the second point. Okay? Now let me go through step by step manner. Everyone can see that this is the info sheet that all of you guys have. Right? When you click on modules and tasks, it will take you to modules and task folder. Then you click on modules and tasks. It is opening. It will take you to the modules, the folders of all the internship. Let's start with the core finance internship. Okay, any of the internship what you are doing, like suppose financial modeling infra. Okay, so there are three modules and tasks. When you finish this modules and task, you need to go to the internship completion.
this. Internship completion formalities. Okay, read it very carefully. See, this internship completion formalities things is not only just the key that oh, just you need to finish a report and get the certificate and get the head cut off myself from this internship. My God, 2 months of torture. Not only that, right? This is also something that you should understand to prepare a very nice report, content wise and the format wise. The interns need to prepare a final internship report, formatting content analysis report should be up to the corporate standard. The interns need to go through the industry case problem and select one project report. That's yes, with the content part. Apart from the making one report, there is no other task in this module. Your evaluation in this internship will run on the report. Hence, to make it a professional way. After preparing the final report, intern need to submit it on the internship completion form. This is the link to submit the internship uh, uh, final report. Right now, let me go through that. What is the final report means? The report should be A4 page only, prepared in MS DOS and Google Docs, and don't prepare. If somebody is tell you to prepare a final report, don't prepare in presentation PPT. No, it is not a report. 10 slides PPT, 8 slides, बहुत लोग, मतलब मुझे समझ में नहीं आता यहाँ लिखा हुआ है कि not be accepted, but a lot of people, I think some of you guys also are thinking that कि मैं तो PPT में बना के दे दूंगा. Okay, now the report should be well formatted and must have all the features of a good report, such as cover page, executive summary, tables of contents, list of figures, list of tables, footnote, endnote, justified text, bibliography, references. ठीक है. अब तुम बोलोगे कि सर इतना सब कुछ हम लोग तो सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट जानते थे बस एंड रेफरेंसेस एट द एंड, बाकी ये सब क्या है, राइट? ओके, सो दैट्स व्हाई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ a good report we have given you a sample report. Let me open this sample report. This sample report was prepared by one of the largest think tank of India and world, TERI. Okay, now see the features of a sample report. Okay, see, I know that you guys are doing internship here and these guys have charged 10 to 20 lakh rupees to make this one report. तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है, इसलिए मैं we we used to, if somebody make a nice report little bit not up to corporate standard also, we give them internship certificate. उतना टफ नहीं करते हैं. I know you are not a consultant to a very large organization, intern है, student है, but at least in your mind you should know that how the consultants are doing and how well you can do. मतलब स्कूल क्रिकेट खेलते खेलते में आदमी 15 20 25 रन बना लिया, उसी में मैन ऑफ द मैच मिल गया, बट इट डजंट मीन दैट ही विल स्टॉप seeing Chand Tendulkar, right? He should know how Virat Kohli is playing and all, right? So this is the cover page of the report. The cover page have some about the report and all these things, right? And the end, the logo of the organization, okay, and whosoever logo, and sometimes people write their name also by this compiled by. Okay, now this is about of the organization whom you are working, about page, their email IDs and all these things. Now this is acknowledgements, executive summary. So suppose sometimes in some in reports this about page and this acknowledgement page is not very important. Okay, suppose if there is some report, a lot of people are attached to it. जैसे कि तुम एक फाइनल PhD रिपोर्ट बना रहे हो, यू आर मेकिंग ए फाइनल PhD रिपोर्ट and you want to acknowledge your guide, your external guide, your mom, your dad, say your sister and some fellow PhD students and all. तो लोग इसको acknowledge करते हैं कि ये पूरा जो PhD है 4 साल का जो whatever thing, it is because of them. People acknowledge. But for internship, if you don't acknowledge, no problem. These two. But third thing, this is very important in any corporate report. Executive summary. Executive summary means
and it should be in one page maximum. Here it is more than one page, but anyway, in internship report it should be one page. What is the executive summary means? Summary about whatever is written in this report. कोई भी report का summary क्या होगा? Right? Suppose you are making a report of internship, and think one more thing. Please don't push our coordinator and myself कि सर इसमें लिखें क्या? क्या लिखें सर? एग्जीक्यूटिव समरी है, उसमें नहीं, ये आपको लिखना है. You need to write, because the way you write, that is the way this internship is getting set up in your brain. हम लोग नहीं बता सकते. You need to write कि Vardhan, we have done in this internship in Vardhan Consulting Engineers. We learned a lot in this, that, electric vehicle or project finance, financing, infrastructure financing, this, that, project fund finance, whatever in the report, write in the executive summary. Summarize your whole internship journey in the executive summary. Okay, that is the first thing. Second thing is comes after the executive summary is table of content. Okay, so they have prepared the table of content which is connected to the text which is written. Like suppose limitation, when I click on limitation, it will take me to limitation. See, this is how the table of content should be prepared. लोग क्या करते हैं, लोग खुद से टाइप करने लगते हैं डैश 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 करके, यहाँ पे they put their dates यहाँ पे, right? But the table of content should be connected to the content. जैसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी, तो collect on electricity. See, we'll come to that page. Okay, so this is how the table of content should be. बट अगर आपको एकदम इस तरह से लिखना नहीं आता, you don't know MS Word में ये चीज आता है कि how to connect the table of content, insert table of content with the content, but you should prepare a table of content. Okay, now list of table, list of figures. ठीक है, अब now a lot of people say कि सर मेरे रिपोर्ट में तो टेबल है ही नहीं, अब उसमें लिस्ट क्या बना है? यहाँ तो लिस्ट है, मतलब देयर आर मोर देन वन टेबल. हमारे में तो टेबल ही नहीं है, तो हम लोग लिस्ट क्या बनाएंगे? कुछ लोग बोलते सर फिगर ही नहीं है. बट think about it, and it is very very important. Any professional report should and must have tables and figures. अगर सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, it will be treated as a novel. अगर if you have done some analysis, ठीक है, या किसी और का एनालिसिस आपने उठाया है, कंपाइल किया है, वहां से रेफरेंस लिया है, तो यू शुड एंड मस्ट पुट टेबल्स एंड फिगर्स. जैसे कि अब तुम बोलोगे सर मैंने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया है सर, उसमें क्या टेबल डालूं मैं? नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पास्ट 20 years, नंबर ऑफ pollution, diesel the change of diesel electric cars in past 20 years, उसका कोई फिगर डेटा उठाओ, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, how much number of tons of CO2 is emissions through the automobiles in past 5 years, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे डिक्रीज कर रहा है 5 years का, ऐसा कुछ डेटा, फिगर्स, टेबल्स उठाओ कहीं से, किसी का भी डेटा सोर्स. एंड इट इज नॉट नहीं कि तुम्हें ही बनाना है, यू नीड टू मेक, नो, जस्ट कॉपी पेस्ट डेटा फ्रॉम समवेयर और उसका एक रेफरेंस डाल दो. somebody have done a research, McKinsey have done a research, as per that refers कि जो इलेक्ट्रिक, यू आर मेकिंग ए पॉइंट इन योर रिपोर्ट, तुम एक पॉइंट मेक कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेक्नो कमर्शियल एनालिसिस कैसे होता है, और यू आर मेकिंग ए पॉइंट दैट हाउ द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर डन. उस पॉइंट को मेक करने के लिए इफ यू वांट टू टेक टेबल्स और डेटा फ्रॉम द इंटरनेट विथ अ प्रॉपर सोर्स, देयर इज नो हार्म इन इट. ओके, सो अभी तक मैंने बताया देयर शुड बी ए कवर पेज, यस. कवर पेज के बाद आएगा एग्जीक्यूटिव समरी, यस. एग्जीक्यूटिव समरी के बाद टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, यस. टेबल ऑफ कंटेंट के बाद लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, यस. उसके बाद एब्रिविएशन होता है, बट इफ योर रिपोर्ट इज शॉर्ट, इट्स इंटर्नशिप रिपोर्ट, देयर इज नो नीड फॉर एब्रिविएशन. यहां से फिर शुरू हो गया चैप्टर. ठीक, नाउ टू मेक इट सिंप्लीफाई, आई टोल्ड ऑल द इंटर्न्स कि
रिपोर्ट 15 से 30 पेज में होगा, 15 to 30 पेजेस, बट आइडियल इंटर्नशिप रिपोर्ट शुड बी अबाउट 25 पेज। अब बहुत सारे लोग 15 पे ही खत्म कर देते हैं, सर आपने 15 बोला ना, आई हैव प्रिपेयर्ड 15, गिव मी द सर्टिफिकेट। ओके, दैट्स फाइन, बट make it at least 27, 25, 27 pages. The report should be of 25, 27 pages. It should not cross 30 pages because it's an internship report. Okay. Content of the report पे आते हैं. It should have an introduction chapter and conclusion chapter. ये दोनों chapter तो रखना ही है. बीच का जो chapter है, you need to decide as per your project. Suppose for financial risk assessment, introduction, yes, yeah, you know, it's a financial risk assessment infrastructure project. It's a very risky project, so a lot of investment is there, so we need to prepare and blah blah. वो इंट्रोडक्शन में डाला. उसके बाद आएगा कि सेकंड लिस्ट ऑफ रिस्क, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट, पॉलिटिकल रिस्क. देन उसके बाद एक चैप्टर ला लो, एनालिसिस, स्पेशल एनालिसिस ऑन रिस्क असेसमेंट ऑफ, जो भी आपका प्रोजेक्ट था, जैसे रिस्क असेसमेंट ऑफ 10 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट, उसी पे 2 चैप्टर डाल दो. इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज योर लर्निंग एंड ऑल दिस थिंग्स. सेकंड में जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डाल दो. ओके, देयर शुड बी 5 चैप्टर्स. एग्जीक्यूटिव समरी में यहाँ लिखा हुआ है कि यू शुड मेंशन अबाउट वीसी एंड एक्सपीरियंस एंड अबाउट दिस. देयर इज नो नीड टू, अ लॉट ऑफ पीपल हमारा वेबसाइट पे जाते हैं एंड दे कॉपी पेस्ट ऑल द टेक्स्ट फ्रॉम द वेबसाइट, वीसी ये वीसी, और 2-3 पेज तो वीसी पे ही बखान करने में दे फिनिश. ओके, नाउ अब जब ये इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक हो गया, उसमें तुमने टेबल और चार्ट्स भी डाल दिए. कंक्लूजन के बाद क्या? नाउ लेट्स गो ऑन आवर रिपोर्ट अगेन. जैसे कि ये पूरा बताया, इन्होंने काफी चार्ट वगैरह डाल रखा है नाउ. ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इन चीजों के बीच, इन द कंटेंट पार्ट, राइट, कहीं कहीं पे यू कैन सी देयर इज अ फुट नोट. ये देखो, ये फुट नोट है. व्हाट इज दिस फुट नोट मीन्स? जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ IFC लाइटिंग एशिया 2, तो जब व्हेन यू गो टू MS वर्ड, वहां पे फुट नोट इंसर्ट करने का एक सिस्टम है. फुट नोट इंसर्ट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि ट्रू, IFC लाइटिंग एशिया प्रोग्राम promotes access to clean affordable energy by working private sector, blah blah blah. It means there is something here which needs a small explanation. जैसे कि तुमने कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते बोलते अचानक से तुमने लिख दिया विराट कोहली, राइट, या विराट. तो अब लोग, ये विराट क्या है, विराट, ये विराट इस, हाँ, विराट कोहली वाला विराट है. तब तुम बोलोगे ना विराट, उसमें तुमने एक फुट नोट डाल दिया, ये बोलोगे विराट इज द प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल समथिंग, कुछ ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया, राइट, उज्ज्वला योजना ये सब. तो उसका ओके, मतलब दैट इज समथिंग. दिस इज कॉल्ड फुट नोट. A good report should and must have some footnotes. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है. If the report content is so sweet, normal, there is no explanation needed, तो footnote नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट अगर डाल दोगे तो प्रोफेशनली इट लुक गुड. देखो यहाँ भी footnote डाल रखा है. ठीक, अब देखो ग्राफ हर जगह डाला है, पाकिस्तान का क्या, बांग्लादेश का क्या है ये, एंड सोर्स जरूर डाला है. सोर्स, ग्राफ का सोर्स क्या है. अगर सोर्स नहीं डालोगे तो पीपल थिंक दैट यू नो यू आर मेकिंग द ग्राफ. कभी कभी फुट नोट में पूरा का पूरा लिंक भी डाल दिया, IEC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिफॉल्ट 5 इमेज से है कि इससे पढ़ लो, यहां से उठाया गया. नाउ व्हेन यू फिनिश ऑल द चैप्टर्स, सारा चैप्टर खत्म हो गया. अब एंड में क्या आता है ये देखते हैं. कंक्लूजन. ये कंक्लूजन खत्म. कंक्लूड करते हो कि हमने क्या इंटर्नशिप में सीखा, और इसमें ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. यू पुट इन दैट कंक्लूजन. उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस. जैसे ये पूरा रेफरेंसेस है, ठीक.
यहाँ पे बिब्लियोग्राफी नहीं दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि सिंस ये रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट में बहुत सारे अलग रिपोर्ट्स को लिया गया, तो ये दे पुट द रेफरेंसेस। देयर इज अ वे टू पुट रेफरेंस, दिस इज हाउ टू पुट रेफरेंसेस। एमएस वर्ड में रेफरेंसेस को डालने का भी एक तरीका है, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, इट इज वेरी इजी। ठीक, अगर उस फॉर्मेट से रेफरेंस नहीं डालना है बट फिर भी रेफरेंस डालना होता है किसी भी रिपोर्ट में। ठीक है, व्हेन यू फिनिश द रेफरेंस उसके बाद एनेक्जर्स आते हैं, अगर रिपोर्ट के साथ कुछ और अटैच्ड है तो। जैसे कि लॉट ऑफ टाइम फाइनेंशियल मॉडलिंग रिपोर्ट के साथ दे पुट द एनेक्जर एज ए फाइनेंशियल, द एक्चुअल फाइनेंशियल मॉडल एज द एनेक्जर। एंड एंड में बैक पेज, बैक कवर पेज। Okay, that is what a good corporate standard report look like. Now, whatever I told you right now, anybody have any doubt?